3 એટલે કે પાઠ 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાએ, જેના લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી, જેમનો જન્મ થયો છે 1907 અને નિધન થયું છે 1979। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ई से 1950 ई तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्यापक अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो मित्रों, आ थई गई आपणे आजनी प्रस्तावना। हवे पाठ जोईशुं। जो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है એટલે કે છે કે મારું મન ક્યારેક ક્યારેક ઉદાસ થઈ જાય છે। मन बैठ जाना એટલે કે ઉદાસ થવું। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते। એટલે કે છે કે આજના જે આપણા સમાચાર પત્રો આવે છે, જે ન્યૂઝપેપર, એમાં ઠગી એટલે કે ડાકો ડાળવો, ડકેતી ઠગી એટલે ઠગી એટલે કોઈને દગો દેવો અને ડકેતી એટલે ડાકો ડાળવો, ચોરી, तस्करी અને भ्रष्टाचार समाचार पत्रों भराયેલા હોય છે। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। એટલે કે છે કે આરોપ પ્રત્યારોપનું કોઈ એવું વાતાવરણ સર્જાણું છે કે લાગે છે કે દેશમાં કોઈ ईमानदार व्यक्ति જ નથી રહ્યું। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है એટલે કે દરેક વ્યક્તિ શંકાની નજરોથી જોવાઈ રહ્યો છે। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। એટલે કે છે કે જે વ્યક્તિ જેટલા જ ઊંચા પદ ઉપર છે એટલા જ એમાં વાંકો દેખાડવામાં આવે છે તો શોધવામાં આવે છે। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। એટલે લેખક કહે છે કે કોઈ મહાન વ્યક્તિએ મને કહ્યું હતું કે આ સમયે સુખી એ જ છે જે કંઈ પણ કામ કરતો નથી, અને જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈક કામ કરતો હશે તો હંમેશા લોકો એનામાં કોઈક વાંક કાઢતા હશે। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। એટલે લેખક કહે છે કે એના જે સારા ગુણો છે એને ભૂલાવી દઈને જે એના વાંક છે એને જ લોકો ધ્યાનમાં રાખે છે। दोष किसमें नहीं होते એટલે કહે છે કે ભૂલો કોનામાં નથી હોતી, વાંક કોનામાં નથી હોતો। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। आज कारण है कि दरेक व्यक्ति दोषी देखाय છે, गुणी ओछा એટલે કે सारा व्यक्ति ओछा अथवा तो बिल्कुल ज नहीं देखाता। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। એટલે કહે છે કે જો પરિસ્થિતિ આવી જ રહેશે છે તો આ નિશ્ચય ચિંતાનો વિષય છે। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। એટલે લેખક કહે છે કે શું આ એ જ ભારતવર્ષ છે કે જેનું સપન તિલક અને ગાંધીજીએ જોયું હતું।
रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। गह्वर એટલે ખાડો એટલે કહે છે કે રવિન્દ્રનાથ ઠાકોર અને મદન મોહન માલવીયનું મહાન સંસ્કૃત સભ્ય ભારતવર્ષ એ કોઈ અતીત એટલે ભૂતકાળના ખાડામાં ડૂબી ગયું છે। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया। એટલે જો મિત્રો આપણે જે ભારત દેશ છે એ બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે જેમાં બધા જ ધર્મના લોકો વસવાટ કરે છે જેવા કે આર્ય, દ્રવિડ, હિન્દુ और મુસલમાન, યુરોપીય અને ભારતીય આદર્શોની આ મિલન ભૂમિ એટલે કે મહામાનવ સમુદ્ર શું સુકાઈ ગયો છે। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता એટલે કહે છે કે મારું મન કહે છે કે આવું બની જ ના શકે। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा એટલે કહે છે મનીષીઓ, પંડિતો, વિદ્વાનો, અમારા આ મહાન પંડિતો અને વિદ્વાનોનો આ સપનોનું ભારત છે અને હંમેશા રહેશે। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। અત્યારે એ વાત સાચી છે કે આજના જે સમયમાં આ જે દિવસો છે એમાં ઈમાનદારી અને મહેનતથી જીવિકા એટલે પોતાનું ગુજરાન ચલાવવાવાળા જે લોકો છે નિરીહ और ભોલે ભાલે શ્રમજીવી એટલે કે પોતાનું જે ગુજરાન ચલાવવાવાળા જે વ્યક્તિઓ છે એ પીસાઈ રહ્યા છે। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फूल फल रहे એટલે કે છે જે સાચું બોલે છે જે ઈમાનદાર વ્યક્તિ છે અત્યારે પીસાઈ રહ્યા છે અને એની સાપેક્ષમાં જે વ્યક્તિ ખોટું બોલી રહ્યા છે, દગો કરી રહ્યા છે એ બધા વ્યક્તિઓ સમૃદ્ધ છે। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से ही पड़ी है એટલે કહે છે કે જે ઈમાનદારી જે સાચું બોલવાવાળા વ્યક્તિ છે એને મૂર્ખની સમાન ગણવામાં આવે છે અને જે ડરપોક લોકો છે, કાયર લોકો છે અને જે મજબૂર લોકો છે એ જ લોકો સચ્ચાઈ એટલે કે સાચું બોલે છે। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है એટલે કહે છે કે આવી જે પરિસ્થિતિઓ છે એને જોઈને લોકોને પોતાના જીવનના જે મહાન મૂલ્યો છે એના વિશે પોતાની જે શ્રદ્ધા છે એ ડગમગવા લાગી છે। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। ત્રુટિઓ એટલે ભૂલ અને મનુષ્ય નિર્મિત નીતિઓ એટલે કે જે મનુષ્ય ઘડેલા નીતિ નિયમો છે તે તો શું કહે છે જુઓ કે અત્યારે જે કંઈ ઉપર દેખાઈ રહ્યું છે એ તો હાલમાં જે મનુષ્ય દ્વારા જે નીતિ નિયમો ઘડવામાં આવેલા છે એની જ ભૂલો છે। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है એટલે કે છે जो सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है એટલે કે મનુષ્ય બુદ્ધિ છે એ હંમેશ માટે પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે નવા નીતિ નિયમો ઘડતી રહેતી હોય છે, નવા કામો શોધવા માટેના નીતિ નિયમો ઘડતી રહેતી હોય છે અને જો એ નીતિ નિયમો કામ ન લાગે તો એને બદલતી પણ રહી છે। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सूखकर नहीं होता એટલે કહે છે કે નિયમ જે કાનૂન છે એ બધા લોકો માટે સરખા હોય છે, કોઈ એક વ્યક્તિ માટે નથી હોતા। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ था आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। आलोड़ित એટલે મથું એટલે શું કહે છે જુઓ યુગ બદલાય છે ત્યારે આદર્શ પણ બદલાય છે, જૂના કાયદા કાનૂનોની જગ્યાએ નવા કાયદા કાનૂન પણ આવે છે, એમાં અંતર તો હોય જ છે। નવા જમાનાની સ્થિતિ પણ કંઈક એવી જ છે, એમાં કશું નવું હોતું નથી, દરેક પરિવર્તન પછી આવું જ થાય છે, એમાં કંઈ પણ હતાશ થવાની જરૂર નથી। भारतवर्ष में कभी कभी
भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व નહીં દિયા હે। એટલે કહે છે કે ભારત વર્ષે ભૌતિક વસ્તુઓના સંગ્રહને ક્યારે પણ વધુ મહત્વ નથી આપ્યું। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। એટલે કે છે એની દૃષ્ટિએ મનુષ્યની અંદરની જે કળાઓ છે એ જ એમના માટે સર્વશ્રેષ્ઠ છે। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और सब अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत નિકૃષ્ટ આચરણ છે। એટલે કહે છે કે ભારતે કદી પણ ભૌતિક વસ્તુઓના સંગ્રહને મહત્વ નથી આપ્યું। આપણે ત્યાં આધ્યાત્મને જ મહત્વ અપાયું છે। મનુષ્યમાં લોભ, મોહ, કામ, ક્રોધ વગેરે વિકારો હોવા સામાન્ય છે, પરંતુ ભારતે આ બધા પર સંયમને મહત્વ આપ્યું છે। જુઓ, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। એટલે કે છે કે ભારત વર્ષે ક્યારે પણ એને ઉચિત નથી માન્યું અને એણે હંમેશા શાંતિથી કામ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, પરંતુ જે વ્યક્તિને ભૂખ લાગે છે એ ભોજન વગર નથી રહી શકતો, જે બીમાર વ્યક્તિ છે એ દવા વગર નથી રહી શકતો, જે વ્યક્તિ પોતાના રસ્તા પરથી ભટકી ગયો છે એને પોતાના રસ્તા પર પાછો લાવવાની અપેક્ષા નથી કરી શકાતી। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते। એટલે શું કહે છે કે આજે એવું થયું છે કે આપણા જે દેશના દરિદ્રજનો છે, ગરીબ જનો છે, એની ગરીબી દૂર કરવા માટે, એના દુઃખોને દૂર કરવા માટે નવા કાયદા કાનૂનો ઘડવામાં આવ્યા છે। આજે દેશમાં કૃષિ, ઉદ્યોગ, વાણિજ્ય, શિક્ષણ વગેરે ક્ષેત્રોમાં વિકાસ થવો જોઈએ, પરંતુ જે લોકોને વિકાસની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તેઓ લક્ષ્ય ભૂલી ગયા છે। તેઓ દેશ હિતને ભૂલીને પોતાની સુખ સુવિધા વધારવામાં લાગી ગયા છે। તેઓ ભારતના પ્રાચીન આદર્શો ભૂલી ગયા છે। व्यक्ति चिद सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए। એટલે કે છે કે વ્યક્તિનું જે મન છે, વ્યક્તિચિત એટલે વ્યક્તિનું જે મન છે એ હંમેશા પોતાના આદર્શો પર નથી ચાલતું હોતું। જેટલા જ ઊંચા પદ પર અથવા તો મનુષ્યની સમૃદ્ધિ માટે જેટલા નીતિ નિયમો ઘડવામાં આવે છે એટલા જ લોભ અને મોહ પણ વધતા જાય છે અને લોકો પોતાનું જે લક્ષ્ય છે એ પણ ભૂલી જાય છે। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। એટલે કે છે કે આદર્શો જે છે, નીતિ નિયમો જે વ્યક્તિ પાળે છે એને હંમેશા મજાકનો વિષય ગણવામાં આવે છે। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। એટલે કે જે પરિણામ આવવાનું હતું એ આવી જાય છે। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। એટલે કે છે આ બધા જે છે, આ બધી વસ્તુ જે થઈ રહી છે એ અમુક જે લોભી લોકો છે, લાલચુ લોકો છે એના કર્મનું ફળ છે, પરંતુ ભારતવર્ષ આના કારણે જ ભારતવર્ષ પોતાના જે જૂના આદર્શો છે, નીતિ નિયમો છે એને વધુ મહાન बतावे छे अने उपयोगी देखाई रह्यु छे।
भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। એટલે કે ભારત વર્ષ છે એ હંમેશાથી કાનૂન અને કાનૂનને ધર્મના રૂપમાં જોતો આવ્યો છે, પરંતુ આજે એકાએક કાનૂન અને ધર્મને અંતર कानून અને धर्म वच्चे अंतर જોવાઈ રહ્યું છે, દેખાઈ રહ્યું છે। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता એટલે કે છે કે ધર્મને દગો નથી દઈ શકાતો, પરંતુ કાનૂનને દઈ શકાય છે અથવા તો દેવામાં આવે છે। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करे। ए ज कारण है कि धर्मने लोको छे ने धर्मने दगो नहीं दई सकता, परंतु कानून जे छे एनी जे भूलो छे ए उठावामां संकोच नहीं करता। कानूननी जे भूलो छे एनो लाभ उठावामां संकोच नहीं करता। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। એટલે શું કહે છે કે અત્યારે આ વાત ઉપર જે પ્રમાણ જોઈ રહેવાયું છે કે અત્યારે ઉપરી વર્ગોમાં જે પણ થતો હોય, પણ અંદરથી ભારત વર્ષ એ જ અનુભવ કરી રહ્યું છે કે અત્યારે ધર્મ એ કાનૂન કરતાં ઉપર છે। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। આજે પણ હજી जो अब वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं को सम्मान करता है। એટલે કે છે કે આજે પણ મનુષ્ય એકબીજાને પ્રેમ કરે છે અને મહિલાઓનું સન્માન કરે છે, એકબીજાનું માન રાખે છે। झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। એટલે કે જૂઠ અને ચોરીને ખરાબ સમજે છે, ખોટું સમજે છે, અને જે બીજાને પીડા પહોંચાડે એને પણ પાપ समझे છે। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। એટલે કે દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં આ વાતનો અનુભવ કરે છે। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। એટલે કે છે કે જે સમાચાર પત્રોમાં જે ભ્રષ્ટાચાર પ્રત્યે આક્રોશ દેખાઈ રહ્યો છે એ વાત સાબિત કરે છે કે આપણે એવી વસ્તુઓ, એવી જે ચીજો જે થાય છે એને આપણે ખરાબ સમજીએ છીએ અને સમાજમાં જે આવા તત્વો છે એની પ્રતિષ્ઠાઓ ઓછી કરે છે કે જે લોકો ખોટા કામ કરીને ધન અને સન્માન કમાય છે। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। એટલે કે છે કે વાંક કાઢવો એ ખરાબ વાત નથી, પણ ખરાબ વાત એ છે કે જે લોકો ખોટું બોલે છે એના ખોટામાં સાથ દેવો, એને એ જે ખોટું બોલે છે એમાં રસ લેવો, ये बात खोटी माने छे यहाँ लेखक। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। એટલે કે છે કે જે ખરાબ વસ્તુ છે એમાં રસ લેવો એ તો ખરાબ વાત છે જ તે, પરંતુ જે લોકો સારું કામ કરે છે એના વખાણ ન કરવા એ પણ એના કરતાં વધારે ખરાબ વાત છે। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। કેટલીક ઘટનાઓ એવી પણ હોય છે કે જે લોકોના જીવનમાં સારી ભાવનાઓ પ્રગટ કરતી હોય છે, એટલે ભાવનાઓ પ્રગટ કરતી હોય છે। અહીંયા હવે પછીના પેરેગ્રાફમાં લેખક જે છે એ પોતાના જીવનમાં જે સારી ઘટનાઓ બની છે એની વિશે ચર્ચા કરે છે, તો જુઓ।
एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। એટલે કહે છે કે એકવાર રેલવે સ્ટેશન પર ટિકિટ લેતી વખતે મેં 10ની જગ્યાએ 100 રૂપિયાની નોટ આપી દીધી અને ઉતાવળમાં જ એ ગાડીમાં આવીને બેસી જાય છે। એ જે પાછા જે છૂટા લેવાના હોય એ લેખક લેતા નથી। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। એટલે કે જે થોડીક વારમાં જ જે ટિકિટ લેવાવાળો વ્યક્તિ હતો એ દરેક સેકન્ડ ક્લાસમાં ડબ્બામાં દરેક વ્યક્તિનો ચહેરો જોઈને એની પાસે પહોંચી જાય છે। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। એટલે કે છે એ જે ટિકિટ લેવાવાળો વ્યક્તિ જે હોય છે, ટિકિટ આપવાવાળો જે વ્યક્તિ એ લેખકને ઓળખી જાય છે અને એને વિનમ્રતાથી કહે છે અને એના કહે છે અને હાથમાં 90 રૂપિયા આપે છે। તો શું કહે છે, જો આ એક મોટી ભૂલ થઈ ગઈ હતી, તમે પણ ન જોયું અને મેં પણ ન જોયું કે આ 100ની નોટ છે, 10ની જગ્યાએ 100ની નોટ છે। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। એના ચહેરા પર જે વ્યક્તિ જે પૈસા પાછા દેવા આવ્યો હતો એના ઉપર એક સંતોષ હતો। એને જોઈને લેખક પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા અથવા તો નવાઈ લાગી લેખકને પણ। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अन्य घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। એટલે કહે છે લેખક કે આ વસ્તુ જોઈને હું કઈ રીતે કહી શકું કે આ દુનિયામાં સચ્ચાઈ અને ઈમાનદારી લુપ્ત થઈ ગઈ છે। આવી તો કેટલી બધી ઘટનાઓ છે કે જે ઠગી અને वंचना करता पण अधिक महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। એટલે કે છે કે હવે આ લેખક છે એને જીવનની બીજી ઘટના કહે છે। જુઓ શું કહે છે કે એકવાર લેખક બસમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા। એની સાથે લેખકની સાથે એમની પત્ની અને તેના 3 બાળકો પણ હતા, પરંતુ બસમાં કંઈક ખામી હતી એટલે એ અટકાઈને ચાલતી थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, रात के कोई 10 बजे होंगे। એટલે કહે છે કે અચાનક જ 5 મીલ દૂર જતા નિર્જન સુનસાન, નિર્જન એટલે કે માણસો વગરનો રોડ એટલે કે સડક, એટલે કહે છે કે निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। એટલે કહે છે કે લગભગ 5 મીલ દૂર જતાં જ નિર્જન રોડ પર બસ ખરાબ થઈ જાય છે, બંધ પડી જાય છે અને લગભગ રાતના 10 વાગ્યા હોય છે। बस में यात्री घबरा गए, એટલે બસમાં જે મુસાફરો હતા એ ઘબરાઈ જાય છે। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। એટલે કંડક્ટર જે છે એ બસની ઉપર જાય છે અને સાયકલ લઈને ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। એટલે લોકોને શક ગયો કે અમને દગો દેવામાં આવે છે। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। એટલે બસમાં અલગ અલગ વાતો થવા માંડે છે, ભાતની વાતો થવા માંડે છે અને કોઈક કહે છે કે અહીંયા બહુ ચોરી લૂંટફાટ થઈ છે અને હમણાં જ 2 દિવસ પહેલાં જ એક બસને લૂંટી લેવામાં આવી હતી। परिवार सहित अकेला मैं ही था, એટલે કે પરિવાર સાથે હું એકલો જ હતો। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। એટલે કે છે કે બાળકો પાણી પાણી ચિલ્લાઈ રહ્યા હતા, પરંતુ પાણીનું કંઈ પણ ઠેકાણું ન હતું અને એના પાછા ઉપરથી જે આ લોકો વાતો કરી રહ્યા હતા એનો ડર પણ લાગી રહ્યો હતો। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। એટલે થોડાક લોકો જે હતા એ ડ્રાઈવરને પકડીને એને મારવાનો પ્લાન બનાવતા હતા। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, लोगों ने उसे पकड़ लिया। એટલે જે ડ્રાઈવર છે એના ચહેરા એ ગભરાઈ જાય છે અને લોકો તેને પકડી લે છે।
वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। કાતર ઢંગ એટલે લાચાર નજરોથી જે ડ્રાઈવરને જે લોકો પકડી લે છે એ લેખક તરફ એ ડ્રાઈવર લાચાર નજરોથી જોઈ રહ્યો છે અને કહે છે કે અમે આ જે બસ છે એને સારી કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, મને બચાવો, આ લોકો મને મારશે। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। એટલે લેખક કહે છે ડર તો મને પણ લાગી રહ્યો હતો, પરંતુ એની લાલચ નજરો જોઈને મેં જે બીજા મુસાફરો હતા મેં એને समझाव्या कि मारू ये ठीक नहीं। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। परंतु जे मुसाफरो होता ए एटला डरी गया था कि ये लेखकनी बात मानवा तैयार ज नहोता। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। अने कहेवा लागे कि आनी बातों में नहीं आवो, आ आपने दगो दई रह्यो छे। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया એટલે કે છે કે આની વાતોમાં નહીં આવો, આપણને દગો દઈ રહ્યો છે। કંડક્ટરને તો એને પહેલા જ ડાકુઓ પાસે મોકલી આપ્યો છે। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। એટલે કે છે લેખક કે હું પણ બહુ ડરી ગયો હતો, પણ ડ્રાઈવરને મારપીટથી બચાવી લીધો હતો અને 2-3 કલાક એટલે કે 1.5-2 ઘંटे એટલે કે 1.5-2 કલાક જેટલા વીતી જાય છે અને મારા બાળકો भोजन और पानी माटे व्याकुल थई रह्या छे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी એટલે કે मारी पत्नी की हालत खराब थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा था। એટલે કે જે લોકોએ ડ્રાઈવરને માર્યો તો નહોતો, પણ એને બસમાંથી ઉતારીને એક જગ્યાએ ટોળું વળી ગયા હતા। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। लोगों ने मत कि जो कोई पण दुर्घटना थाय तो पहला ड्राइवर ने मारी नाखो एवी लोगोए प्लानिंग घड़्યું હતું। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। એટલે કે છે કે એને જે ડ્રાઈવરે આજીજી કરી હતી એને કોઈ વિશેષ અસર લોકો પર પડી નહોતી। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। एवामां जे आ बधी घटनाओं थाय छे एवामां लेखक दूर रस्ता पर नजर करे छे तो जुए छे कि एक खाली बस आवी रही छे अने एना उपर जे लेखक जे बस में हता ए बसनो जे कंडक्टर हतो ए जे पेली खाली बस आवे छे एना पर बैठेलो होय छे। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। એટલે જે એ આવીને જ કહે છે કે હું નવી બસ અને ખાલી બસ લાવ્યો છું, આ બસ પર બેસી જાઓ, આ બસની અંદર બેસી જાઓ। वह बस चलाने लायक नहीं है, એટલે એ બસ ચાલવા યોગ્ય નથી। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया અને પછી એ જે કંડક્ટર છે એ લેખક પાસે પાણી અને दूधનો લોટો લઈને આવે છે અને કહે છે, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। એટલે કહે છે, પંડિતજી, જે આ બાળકો રોવે છે અમારાથી જોવાનું નહીં, એટલે જ ત્યાં થોડાક माँ पासे दूध मળી गયું એટલે હું લેતો આવ્યો। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। या मुसाफरों जे घबराहट છે दूर થાય છે અને એ લોકો એમને આભાર વ્યક્ત કરે છે। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। અને ડ્રાઈવર પાસે માફી માંગે છે એ લોકો અને 12 વાગ્યા પહેલાં જ એ બસ અડ્ડા પર પહોંચી જાય છે। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। એટલે કે છે કે આ બધી જે ઘટનાઓ છે એ જોઈને હું કઈ રીતે કહી શકું કે આ જીવનમાં મનુષ્યતા એકદમ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, લોકોમાં માયા દયા નથી રહી। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। એટલે કે છે કે જીવનમાં ખબર નહીં કેટલી બધી આવી ઘટનાઓ થઈ છે કે જેને હું ભૂલી નથી શકતો।
ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। એટલે કે છે કે ઠગાવી ગયા એટલે દગો પણ દેવામાં આવ્યો છે, દગો પણ મેં ખાધો છે, પરંતુ કેટલીક જગ્યાએ વિશ્વાસઘાત નામની ચીજ એ બહુ ઓછી જોવા મળે છે। માત્ર એ વાતનો હિસાબ રાખો કે જેમાં દગો ખાધો હોય તમે, तो તમારું तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई। એટલે કે છે કે હંમેશા એ વાતનો હિસાબ રાખો કે જેમાં તમે દગો ખાધો હોય, તમને દગો મળ્યો હોય, તો તમારું જીવનમાં ઓછા કષ્ટ રહે છે। પરંતુ ઘણીવાર એવી પણ ઘટનાઓ બની છે કે જેમાં લોકોએ કારણ વગર સહાય મદદ પણ કરી હોય અને જે નિરાશ મન છે એને પણ સાંત્વના આપી છે અને હિંમત પણ બંધાણી છે। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, तो धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे કે મેં तुम्हारे ऊपर संदेह न करो। એટલે કહે છે, લેખક કહે છે કવિવર રવિન્દ્રનાથ ઠાકોરે પોતાનું જે પ્રાર્થના ગીત લખેલું છે એમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે કે જો સંસારમાં આવી જ વસ્તુઓ મળે, એટલે કે નુકસાન ઉઠાવવું પડે, નુકસાન મળે, દગો મળે, તો આવા અવસરો પર હે પ્રભુ મને એવી શક્તિ દેજે કે હું ક્યારેય પણ તમારા પર સંદેહ શંકા ન કરું। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। मेरे मन નિરાશ હોने की જરૂરત નહીં। એટલે કે છે આવી અનેક ઘટનાઓ છે જેનાથી એમ લાગે કે આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી। તો મિત્રો આપણો આજનો જે પાઠ છે એ અહીંયા પૂરો થાય છે। તો હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈશું। જો स्वाध्याय में पहलो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जो शू है पहलो प्रश्न, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। तो शू आवे, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। बीजो जो भारत का वातावरण आज कैसा बन गया है। तो अथवा तो एम एम है कि देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। तो एम आवशे देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। तो शू आवे, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है। तो शू आवे, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है। तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। तो शू आवे, बस कंडक्टर खाली बस को लेकर लौटा था। हवे जो प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। एमा पहलो प्रश्न जो, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई थी। तो आवश्य, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। बीजू जो, भारतवर्ष
लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। એટલે કે છે लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। त्रीजो छो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। तो शू आवे देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन के अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। चौथुं जो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। तो शू आवे कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यहाँ याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। हवे जो त्रीजो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। एમાં जो पेलो लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। तो एમાં आवशे हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। जो बीजो भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। तो जो भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यही बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यही होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। जो तीजो प्रश्न धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तो एम आवशे शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतीयों की दृष्टि से धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बनी हुई है। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोक सकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। जो चौथा प्रश्न कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई। तो एम आवशे एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई बताई। હવે પ્રશ્ન 4 જુઓ मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलू जो मन बैठ जाना એટલે થાય ઉદાસ એટલે આવશે ઉદાસ होना। पर्दा पत्रक करना એટલે શું થાય पर्दा पत्रक करना એટલે કે भेद खोलना। फलना फूलना એટલે विकसित होना, समृद्ध होना।
હવાઈયા ઉડના એટલે શું થાય? હવાઈયા ઉડના। ચહેરે કા રંગ ફીકા પડના, પર્દાફાશ કરના,